In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So welcome back to the Redress of Poetry by Seamus Heaney. So we are discussing MCQs on it. So this was written by Seamus Heaney, who favored poetry and gave his logics about saving the poets and poetry. So redress basically means remedy or relief. किसी चीज की रेमेडी करना, इलाज करना, उसका हल निकालना, क्योर करना. हीनी यहाँ पे redress को डिफाइन करता है टू रीस्टोर और टू री एस्टैब्लिश. किसी चीज को रीस्टोर करना या किसी चीज को री एस्टैब्लिश करना. फॉर हीनी पोइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ पोइट्री. कि पोइट्री के अंदर एक रेस्टोरेटिव पावर है कि ये रीस्टोर करता है ह्यूमन इमोशंस को, ह्यूमन फीलिंग्स को. कई दफ़ा हम कोई नज़म सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमारे बारे में है. कई दफ़ा हम नज़म सुनते हैं तो हमें जोश आ जाता है. कभी हम कोई पैट्रियोटिक नज़म सुनते हैं तो हमारे अंदर वो जज्बा डेवलप होता है. सो दिस इज रेस्टोरेटिव पावर ऑफ पोइट्री. He cites a poem by Frost called Directive to show that. तो पोइट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट, उसकी एक पोम डायरेक्टिव शेयर करता है इसमें. एंड ही वांट्स टू टेल थ्रू इट दैट इमेजिनेटिव पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि ये ह्यूमन लाइफ की एक इमेजिनेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है. लाइक यू यूज इमेजिनेशन एंड ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन यू. कि इंसान इमेजिनेशन को यूज करके ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. Like MacDonagh was a person, an Irish person, who was against England. He hated British Empire, but he did not reject the poetic tradition of Britain. कि उसे मुल्क से नफरत थी लेकिन उस मुल्क की शायरी से नफरत नहीं थी. Since he was an Irish rebel, so what he wanted कि poetry जो है that should be set apart from politics. Poetry को what Heaney means is, Heaney कहता है कि पोइट्री को पॉलिटिकल इश्यूज के लिए यूज नहीं करना चाहिए. पॉलिटिक्स की अलग डोमेन है, पोइट्री की अलग डोमेन. Heaney wishes to preserve the surprise and joy that poetry provides. कि पोइट्री जॉय भी देती है, सरप्राइज भी देती है. Like it has certain kind of पैटर्न्स और टेक्निक्स जो कि इंसान सरप्राइज होता है इन अ वे कि यू डोंट एक्सपेक्ट कि एक बंदा ये कैसे लिख सकता है. कि फॉर एग्जांपल एक शायर लिखता है कि उसने पानी में आग लगा दे इश्क तेरा. अब पानी में आग लगाना इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ इमेजिनेशन कि पानी पे आग लगी हुई है. सो इस तरह की जो चीजें वो इंसान को सरप्राइज करती हैं और एट द सेम टाइम दे ब्रिंग जॉय, दे ब्रिंग सम पॉजिटिव फीलिंग. हमें मजा आता है यार इस बंदे ने क्या चीज लिखती. द सेलिब्रेटेड पोम्स दैट क्लेयर, he was a poet, a famous poet, wrote in his madness and poverty do not present him or represent him. कि अगर कोई शायर अपनी मैडनेस में, क्योंकि जेल में था, मैडनेस में था, पॉवर्टी में था, उस टाइम पे उसने जो लिखा उस वक्त के हालात के मुताबिक लिखा, सप्रेस था. वर्ड्सवर्थ लंदन में होता तो वो पोइट्री ना करता जो उसने लेक डिस्ट्रिक्ट में जाके की. हम लाइक प्याज काटते हुए, सब्जी बनाते हुए पोइट्री नहीं कर सकते. वी नीड प्रॉपर एनवायरनमेंट फॉर दैट. तो बेसिकली उसकी जो पोम्स जो उसने मैडनेस और पॉवर्टी में लिखी वो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है. लेकिन जो ट्रू पोम्स क्लेयर की जो है, फॉर एग्जांपल माउस नेट. सो माउस का जो नेस्ट, उसके ये जो पोम थी उसकी नेचर के ऊपर लिखी, ये उसकी ट्रू फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है. इट मींस कि पोइट को आजादी होनी चाहिए उन थीम्स पे लिखने की जिस पे वो लिखना चाह रहा है. द पेंटर बाय एशबरी इज अ पोम. वो भी इसी बारे में कि आर्ट जो है वो एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है. आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ये ना पेंट करो, ये पेंट करो. So a painter will paint whatever he is willing to, और वो चीज अच्छी होगी. Heaney sees Clare as a possible model for a postmodern poetry. So he believes that he is the ideal model for the postmodern poetry. The poet takes us to ideal.
So this is one of the argument that he gives कि पोइट हमें आइडियल में ले जाता है, यूटोपियन स्टेट में ले जाता है और इमेजिनेशन में ले जाता है. Poets are the unacknowledged legislators of the world. So this is very important quotation by Shelley, जिसको कोट किया Seamus Heaney ने अपनी बुक में कि पोइट जो हैं वो दुनिया के कानून साज हैं जिनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता. So this was originally said by Shelley and quoted by Heaney. If poetry becomes practical, according to Heaney, it will not remain poetry. It will become a propaganda. तो अगर हम पोइट्री को प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना शुरू कर दें, ये एम्पिरिकल एटीट्यूड इसमें डेवलप कर दें, इसमें एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटीज ढूंढना शुरू कर दें, तो वो पोइट्री नहीं रहेगी, वो रादर प्रोपेगेंडा बन जाएगी. वो पोइट्री की उसके अंदर से फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी. Heaney believes that poetry is indispensable in literature. कि पोइट्री का वजूद लिटरेचर के लिए जरूरी है. Poets convey what we can only imagine. So this is also said in the book. Like he meant to say this, कि जो poets हैं, basically they have the power to use words to bring imagination, and they can present what we can only think. So poets हैं वो words को use करके वो चीजें बना लेते हैं जो कि एक आम इंसान सिर्फ सोच सकता है. So this was The Redress of Poetry by Seamus Heaney.